on in these days, actually it is very difficult for all of us to concentrate on our health, especially what we need to do. So for that purpose, this is the theme behind this session, and it would be a very interesting session. I hope that you will enjoy a lot. You will think, you will learn a lot many new skill set which is not in related to our domain, that is, but it is actually, it will work everywhere we will go. So the idea is to, pass on whatever the learning to the students, to the academic fraternity. So please don't find anything regression or correlation or something like that in this session. This session is absolutely different, and it is based on our own health. And he's a very excellent physio. So we may get some ideas of the posture and so on. So he will start within a minute or so. I have just given a background so that you can make up your mind. Thanks a lot for listening to us quite patiently. And sharp at 2:30, we will share. We will again come to the Google Meet. We will come to the Google Meet. We will ask you to join, and here we will share the question, the link of the test, and we will allow you, because there are 50 minutes. We will allow you 50 minutes, 50 question, 50 minutes MCQs, and it is very easy. I hope that you all are able to crack, solve this. So thereafter, we will start with a validatory session where we will allow you to say something about this particular FDP. You can share your thought, your ideas, or something like that, and you can on your camera. You can share. That would be recorded. That will go to the AICTE, hopefully, or that will be in the domain. So you can make you can prepare for that also. We will give some limited people to share their ideas, because we cannot give everyone. So those who are actually willingful to contribute, they can they please make their things ready. So when we will say that we have started validatory, we will allow you to give your feedbacks or suggestions or whatever you want to. So you can give your ideas or something like that. So that's the total, and then we will sum up the session. So thanks for being with us, and please enjoy the session, the last portion of the session. He's about to join. He called us. Shivani, when once he joined, Dr. Shivani, Yes, sorry, sir. Yes. once he joined, then I will again ask you to start. Okay, sir. Is it visible? Yes, it is very, Okay. very much, very much. Thanks. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. Uh, uh,
Professor Sohrab Khan, sir. Am I audible to you? Yes, yes, sir. Yes, yes. Okay. Yeah, sir. Before begin, Dr. Shivani will give a brief introduction about you. Then you shall start. Okay. Yes, Shivani, Dr. Shivani, please. Thank you, sir. Uh, good morning, everyone. I am Dr. Sohrab, working as an assistant professor in Cambridge Public of Institution. I welcome Dr. Sohrab in session 2 for Fit India Movement or IKS knowledge, which is a little bit different from our FDP, but yes, it's also having a lot of importance so that we can understand what actually the importance of these clinical experiences. Psychological things are also very important for all of us. So Dr. Sohrab has done his physiotherapy course, and he's an associate professor in Department of Rehabilitation Sciences, Jamia Hamdard. He is having a total teaching experience of 15 plus years. He is also having a total clinical experiences of more than 21 years in education and training. Dr. Sohrab also received Physio Excellence Award in the field of physiotherapy. His research interests mainly in osteoarthritis, molecular markers, postural stability, low back neck pain, women health, and ergonomics. So I welcome Dr. Sohrab Khan to enlighten us with the words. Thank you and welcome Dr. Sohrab Khan, sir. Hello. Am I Yes, audible? yes, sir, perfectly audible. Okay. Thank you so much, Dr. John sir, Dr. Rajan sir, Reshma ma'am, and Dr. Asad, for giving me opportunity to share my views on the Fit India movement. Okay. So today I'm going to discuss something about which of us, especially the teaching and are encountered with different problems in daily life, and by following very minor basic precautions, how can we save our body from development of different musculoskeletal problems, more complicated problem? Okay, am I audible? Hello. Sir, your voice is not supporting, sir. It Okay, is that's not breaking. supporting. May I join from my phone? 1 minute. Only Shita, PPT on this. PPT नहीं हुआ इसे. Hello, hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay, okay. Can you share my PPT? Hello. 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 Yes, sir. You are audible. Yeah, whether PPT is visible, PPT is visible. Yes, sir. Okay. So today my topic of presentation is I am going to discuss work-related musculoskeletal disorder. It means how nowadays working population, especially teaching students and whoever is working in sitting posture for a long time. As we see the year, the whole world has been changed from mechanical world to computerized world. Okay, and if we analyze whole big activity, we will came to know that almost 80% activities are we are repeating the same. Okay, so monotonous and repetitive posture. Everyone is doing every day is specific to a specific posture.
For example, suppose if someone is working in sitting posture, so 10 to 12 hours of sitting, okay? Someone is working as a guard, so he is standing for 10 to 12 hours. It means because of nowadays working environment, everybody is involved in monotonous work. Monotonous means same type of work every day. So same type of work is going to lead a problem among us. To see yourself, when we are working in same posture for a long time, it means few structures, especially muscle and joint of body, in working for more time. And we are working in fixed posture, so most of the structure are working for a long time and few structure are not working at all. If you go back 30 years back, when we were mainly farmer or mechanical laborer, so we are trying to use our all body part. We were using our all joint in all direction. हमें बैठ के भी काम करना होता था, खड़े हुए काम करना होता था, साइकिल चलाते थे, है ना, फॉर्मिंग करते थे, performing our activities in different position and different posture. But rise what अभी क्या हुआ कि मोस्टली खासकर अर्बन पॉपुलेशन देखें, मैकेनिकल गैजेट की वजह से फॉर्मिंग आजकल मैकेनिकल गैजेट बेस होगी, जहां आपको कर रहे हैं, या बहुत सारे पहले आपको मैनुअल वर्क की रिक्वायरमेंट थी, अब वो इट हैज बीन चेंज टू सिटिंग जॉब. ओके, सो हाउ we will discuss in our presentation. So how nowadays work is going to affect your musculoskeletal system. I want to tell you that musculoskeletal system is the biggest system of the body. किसी भी इंसान में, किसी एनिमल में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा टिश्यू बॉडी का मसल है. इज द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. क्यों? क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा बायोलॉजी की नॉलेज हो तो एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, अल्टीमेटली वो सब के सब चीजें वो जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और इज द पावर ऑफ द बॉडी. तो जो कुछ भी हम अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया ही वही इनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर मूविंग आवर बॉडी. चाहे वो हमारे हार्ट का मूवमेंट हो, चाहे वो हमारे लंग्स का मूवमेंट हो, चाहे हमारे मसल का मूवमेंट हो. स्ट्रक्चर इज मूविंग ओनली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द energy produced mitochondria, and for kind of maximum mitochondria present in muscle. So muscle is a structure, and nowadays why most of the person is suffering from musculoskeletal problem. अगर आप देखेंगे आजकल हमारी क्लिनिक में होता क्या है, nowadays we are having youngsters who are having pain, knee pain, neck pain, shoulder pain, having lot of musculoskeletal problem even in younger age. When we were a student, we have been taught that the problem of the elderly age. We have been taught this skeletal problem linked with the aging. Person becomes 60 or 70, they develop some musculoskeletal problem. But because of recent development, recent modernization of the world, nowadays musculoskeletal system is most commonly affected, and nowadays we are having a person with 20 years of age who is having low back pain. We are having younger girl who has neck pain, shoulder pain. What are the causes of all these problems in younger age, and how? By following the precautions, by following simple basic guideline, how we can prevent ourselves from development of all this disorder and keep our body fit and healthy. I want also if our muscle is healthy, the whole energy is produced in the muscle, and that is used for functioning of the liver, heart, lungs, kidney. So if muscle will not be able to produce efficiently, somewhere it will also affect our heart, our lungs. That's why you may see the most of the patients of heart, liver, lung, diabetes, and hypertension are more common among urban areas
as compared to rural areas. And the one and most important difference between the lifestyle of urban areas and rural areas is that urban areas people are having poor health of muscle as compared to rural areas. Okay, so I am going to discuss all this problem and how this problem can happen in our body, how we can prevent it, and how by exercise, by yoga exercise or by physiotherapy, how you can prevent your all these skeletal disorder. So first of all, I will try to what is musculoskeletal disorder. Muscle and mean skeletal system. Skeletal system mean bone, ligaments, tendon, nerve, joints, cartilage, spinal disc. These structure they compile the whole musculoskeletal disorder. I will to repeat again. What of musculoskeletal disorder are nerves, or muscle, or tendon, or ligament, or joint, or cartilage, and spinal disc. I would like to give you a brief introduction of all these nerves. Nerves is body. Like in our home system, electrical wire are responsible for the functioning of tubular and all the electrical gadget. Nerves are the wiring of our body, and if we move or if we want to make any of our heart, liver, lung, kidney, muscle, bone, they will only function when they will get from the nerve. I have told you brief about the muscle, how much important muscle is. Tendon. Tendon is the extension of muscle. When muscle is going to attach with the bone, the tendon is the structure with muscle to bone. What is ligament? Ligament is the cord-like structure which connect one bone to other bone. Because as we all know, our body is having 206 bones. Okay, and these 206 bones look like a one whole body. That it is only because all bones are interconnected with the help of ligament. So ligament are important structure uniting your 206 bone and making your body as a one whole structure. Then come to the joints. Joints are the articulation of two bones, and because of joint we are able to move. If we don't have joint, we can't move. And do you know what the importance of movement? Movement is very important. If you see the plants and animal, you will see animals are more advanced than the plant. And the reason is only and only one, that is movement. Animal can move from one place to another place, whereas plant cannot. And because of this movement difference, animals are much advanced, much better. Otherwise, in other aspects, plants are they are taller, they have capability of regeneration. आप उनको काट दीजिए वो फिर से मर जाएंगे, तो काटेंगे नहीं पड़ेगा. तो because of movement, animals are superior. And if you compare the animals and human being, the only difference is human beings are able to stand the gravity. बाकी सारे एनिमल जो है, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एनिमल जो है वो जमीन के पैर चलता है, जबकि इंसान है जो वो जमीन के खिलाफ अगेंस्ट खड़ा हो जाता है सीधे. तो द फर्क है why animals are superior as why human beings are superior as compared to animal. The reason is one and only one, the brain, the superior structure, the manager of the body. The manager of the body, brain is at the top. And because you people belong to management and importance of manager. If manager is at the top, he can effectively manage the whole system. Whereas if the manager is at the to the other employees, system could get failed. So same as in human being, the manager of the body is at the top, so it is effectively managing the whole system, and it is a boss. And because of the manager is at the top, human beings are higher than all. So I have importance of movement. Because of movement, we are superior in work, and it is possible only because of these musculoskeletal structure, which include nerve, muscle,
ligament, joint, cartilage, and spinal disc. And musculoskeletal disorder. Musculoskeletal disorder mean if there is any problem in any of these structure, if there is any problem in any of these structure, we will the person is having musculoskeletal disorder. I will name the common musculoskeletal disorder, very common nowadays, especially in teaching community, student community, worker, whoever is working in long session for a long time, they are greater risk of developing all these problems. The first and most important is neck pain. Neck pain means who is using computer and mobile nowadays, who is going for the studies on tabletop, may encounter with the neck pain in their daily life. And I think more than 90% above 80 may experience neck pain sometime in their life. One other problem is known as golfer's elbow. Time we are involved in typing or writing activities, so typing and writing is going to affect your elbow. And the two very important problems, one is tennis elbow, golfer's elbow is very common. Earlier it was considered this problem was only happening in tennis and golf player, but writing or typing for a long time may predispose your body for more risk for development of golfer's elbow and tennis elbow as compared to playing golf or tennis. Okay. Next important problem is disc bulge. You may be heard about this disc bulge with nowadays. I have told you 20 years back, the literature says disc bulge is the problem of 6 decades. The research shows disc bulge has now entered in the second life. Nowadays, youngster, 70-year-old, 18-year-old children, or you can say youngsters, are having disc bulge, and disc bulge is one of the most commonest nowadays. And most of the time, it can make you disabled. It can paralyze you. It can make you divide off job. So disc bulge is another very common problem nowadays, especially in teaching community, student community, and whoever is working in sitting posture for a long time. Next problem is Achilles tendinopathy. And ankle pain is very common because of prolonged sitting. Plantar fasciitis is one other problem which is happening in foot. Okay. Then osteoarthritis, lumbar disease, Dickerson's disease. There are a lot of problems which is very common nowadays among the youngsters. So we will discuss here in this presentation how this can be predisposed, how they can affect the youngster nowadays, and how we can save our youngster from development of all these problems. So I want to give you some fact about all this problem. They affect millions of people of all ages in the cultural and all cultures and all countries. यानी कि आज के जमाने में दुनिया के हर कोने में, हर जगह पे करोड़ों लोग musculoskeletal problem से affected हैं. As per the Lancet data, Lancet is a very big journal who has published data in 2012. It shows 132 million people. Okay, more than 632 million people are suffering from low back pain. 339 million people are suffering from neck pain. One is osteoarthritis knee. 250 million people are suffering from osteoarthritis knee. And this data doesn't include Indian population, because in India is a very big country with different cultural and ethnic. So presently we don't have data, but this data was given by WHO, who has especially the surveyed through cluster sampling. Have shown this data. They have approximated about this level of people are suffering from these problems. So many people are 632 for back pain, 332 for neck pain, more than 250 for knee pain, and other musculoskeletal conditions are around 561 million people. Okay, so you can hear how many people are suffering from musculoskeletal problem. Now, okay, if we have a present survey on this problem, in the last 9 years, we have
gone through more and more use of computer. We have performed more and more job in sitting posture, and even most of us are work from home, online classes, online, so which are promoting more and more electronic computer gadget. Okay, so if we will have the survey now, we will have almost double of this kind of problem. They problem, that the second greatest cause of disability. Disability means the person is not being able to perform his duties. So this is the musculoskeletal problem is the second greatest cause of the world. We have the fourth greatest impact of the world population. अगर हम बात करते हैं सारी बीमारियों, कैंसर ले लें, इसमें हाइपरटेंशन ले, तो this musculoskeletal problem is the cause of impacting the people health, world's people health. Okay, disability musculoskeletal disorder is estimated to have by 40 and 45%. Okay, 20 सालों में 1990 से लेकर 2010 तक जो cause of musculoskeletal problem वो 45% बढ़. Next is osteoarthritis, the fastest in major health condition. This relates the aging of population, increase obesity of physical activities. So because of these are three important factors: aging population, obesity as well. Third thing is the most important is lack of activity. So we cannot revert the aging. We cannot revert the aging process, but the other two factors like obesity and physical activity, we have control, and by proper guidelines we can revert these two things. Okay, and before going to detail, I will try to discuss the importance of muscle. Our body contains more than 6 cells, and I have already told you function as the produce more than 90% of the energy in your body cell. हमने कहा ना, तो यानी किसी भी चीज को किसी भी के लिए we need energy. Okay, like चलाएंगे you need petrol. Without petrol क्या करना है? Without energy our body cannot move. Movement doesn't mean only our movement. Movement means heart is continuously, lungs is continuously moving. Even if a heart is up for 1 minute, people will die. So for smooth functioning of heart should move, contract. Movement of the heart is pumping the blood and impure blood. Okay, so heart is collecting and supplying blood and movement only, and the needed for the movement has the mitochondria, and I have told you mitochondria कहाँ होती है? मसल में होती है. So the inner functioning of muscle will not be able to optimal energy. जब बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो होगा क्या कि आपके शरीर को ऑप्टिमल एनर्जी नहीं मिलेगी, होगी, और इसकी वजह क्या होता है कि वी आर हैविंग अर्ली स्ट्रोक, वी आर हैविंग अर्ली किडनी फेलियर, अर्ली हार्ट फेलियर. ओके, लंग्स प्रॉब्लम आज के जमाने जो बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल हमारी मसल का और फिटनेस का है. माइटोकॉन्ड्रिया रियली इंपॉर्टेंट इन डिमांडिंग अगर muscle and brain. I have told you for the functioning of all these structure, mitochondria is very important. 40 each muscle cell are and liver cell are mitochondria. Okay, mitochondria is very important and they are present in muscle. As for your information, muscle are divided into 3 types: smooth muscle, cardiac muscle, and smooth muscle mean जिसकी हमारी किडनी बनी है, हमारा जो है वो लंग्स बना है, हमारा स्टमक बना हुआ है. दे आर मेड अप ऑफ इसका हमारा हार्ट और स्केलेटल मसल जो हमारी पूरी बॉडी का, और जो मसल है हाथ की मसल, पैर की मसल, दे मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन यू वुड नो हमारी बॉडी का जो
40% weight है, that is only because of muscle. 40% of the body weight is because of muscle. यानी कि 40% हिस्से में है, 8% में ब्लड भी है, फ्लूइड भी है, उसके अलावा बोन भी है, फेशियल, बट मसल इज मेकिंग 40% body. Smiling takes place while throwing takes 40%. I'm giving you an example कि every activity we are doing, चाहे हमारा कोई expression हो, चाहे हमारा कोई aggression हो, for every is performing to show our different functioning and what is the main function of muscle? And most important function of muscle is muscle us from one place to other place. Heart, our liver, our lung, kidney, and brain. Okay. Second function of muscle is stability. Muscle 200 moving together, and muscle is the ropes of the body which are controlling the movement of the bone and keep our body moving. So muscle is moving us with stability. तो stable हमको दिखते भी नहीं है, हम जंप करते हैं, रन करते हैं, ग्राउंड stability, muscle stability, and third which is taking our desired against gravity. हम बैठना है, खड़े होना है, जंप करना है, हाफ लाइन करना है, that is, और उस posture को मिलता है. Next thing, muscle also help in circulation. Circulation mean कि blood from one space to other space. Okay, heart अब वो ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, तो मसल इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल दबती है और मसल रिलैक्स होती है, मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, fluid inside the muscle belly comes out. Muscle relax, it again fill with the fresh blood. आप एग्जांपल है, रसगुल्ला है, जब दबाएंगे रसगुल्ले को निकल जाएगा, छोड़ेंगे रसगुल्ले को वो फिर जो है शीरा एब्जॉर्ब. तो muscle is like rasgulla. When it compress, it releases all the fluid and blood, impure blood inside. And when muscle relax, it again suck the fresh and oxygenated blood. Okay. So by movement, by contraction and relaxation, muscle is also helping in blood circulation. जब आप लोग कभी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रन दौड़ते हैं, तो आपका चेहरा लाल हो जाता है. क्यों? Because of muscle contraction, the blood flow has been increased. Next important function of muscle is respiration. Respiration means breathing in and carbon dioxide out. It is not possible without the contraction of muscle. Different intercostal which are controlling the movement of rib cage. Okay, तो rib cage को बाहर ले जाती है अंदर. तो muscle contraction, relaxation, rib cage is and expanding, compressing and expanding. The air are going out and coming in. So muscle is also responsible for respiration, digestion. All know whatever we eat, eating is the one important aspect. Okay, हम लोग साहब तो कुछ खाते नहीं है, बड़े मोटे हैं, है ना, और एक साहब बहुत खाते हैं, पतले हैं. तो खाना जो है, फॉर टेल यू, कोई चीज खाना इज फर्स्ट स्टेज. मान लिया एग्जाम्पल लीजिए कि हमने 3 केले खाए और आपने 3, तो अगर आपको दिखेगा तो अब क्या हुआ? खाना खा ली पहले. स्टेज इज डाइजेशन, कि आपने 3 खाए, 3 हजम कर लिए, मैंने 3, तो यानी कि हम आपकी बॉडी को हमारी बॉडी का 3 गुना मिला. आर यू गेटिंग मी? जो हम लोग देखते हैं डाइजेशन, कि जो खाया उसने हजम किया, जो हजम नहीं हुआ बेकार है, वो किसी काम का नहीं है. तो हमने जो खाया वो हजम हुआ. हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. आई एम ऑडिबल? ओके ओके.
Yes, I sir, was you are saying, audible. हम जब कुछ खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी का पहला स्टेज है, हमने खाया उतना खाया, दैट इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डाइजेशन, कि हाउ मच वी डाइजेस्ट. आई हैव गिवन एग्जांपल, एक रोटी खाई, एक ने 2 रोटी खाई, लेकिन अगर दोनों ने हजम एक ही की तो दोनों बराबर खाया. तो सेकंड स्टेज इज डाइजेशन, यू शुड हैव अ गुड डाइजेशन. थर्ड स्टेज इज एब्जॉर्प्शन, कि हमारी बॉडी ने ब्लड ने अब किया. अब फॉर एग्जांपल कि हमने एक खाया किया और एब्जॉर्ब किया, आपने 3 खाया, एक हजम किया, आधा एब्जॉर्ब किया. तो देख तो रहा खाया, लेकिन एक्चुअल में आपने हमारी एक एब्जॉर्ब कर लिया किया. तो थर्ड स्टेज ऑफ दिस डाइजेशन सिस्टम इज कि हमारी बॉडी किया, ब्लड ने कितना एब्जॉर्ब. एंड द फोर्थ इज मेटाबॉलिज्म, कि हमारी बॉडी ने जो एब्जॉर्ब, उस एब्जॉर्प्शन हमने उसका यूटिलाइजेशन किया, बॉडी के बिल्डिंग प्रोसेस में हमने उसका कितना एब्जॉर्ब किया और पांचवा तक कितना एक्सक्रीट कर दिया. जो हम एब्जॉर्ब एक्सक्रीट कर देंगे, है ना. तो जो की चीज हम खाते हैं बॉडी में कितना लगेगा, दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन द ओशन, डिपेंड करता, दैट डिपेंड ऑन इंजेक्शन, डाइजेशन, absorption and metabolism. Okay, its size, or if muscle is having healthy muscle, it will help in your digestion, ingestion, it will help in your absorption, and it will help in your metabolism. So being a fitter muscle is not very important for mobility, stability and expression, but also for the digestion, metabolism, etc. Okay, excretion, हाँ, हमारी बॉडी जो चीज मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते, यूरिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं. सो यूरिनेशन के भी unless your muscle be eat from your body, okay, especially in older females and whoever is, they are having a very common problem known as urinary incontinence. एक प्रॉब्लम होती है जिसमें लेडीज का होता है इसका एज में और लेट एज में, कि when they sneeze they leak a urine, when they laugh they leak a urine. Okay, wherever there is a pressure on the abdomen they leak urine, and this is because of muscle. Okay, so by strengthening of the muscle we can cure this problem. Yes Sir, sorry to interrupt, लेकिन sir, there is a lot of voice breaks. Sir. okay, now is it not? No, there is a problem, sir. Problem मतलब क्या है? कभी सही हो जा रहा है सर, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर से ब्रेक करने लग रहा है सर. अच्छा, कैसे करता हूँ? should I join from my own my mobile? आप जैसा चाहें सर, ठीक है. बट ओके ओके ओके. हिबा यहाँ बेटा, ये वाला इसको बंद करो, शेयर करना इसमें, इसमें आप बंद करो, इसका बंद हो जाएगा. नहीं, आवाज बार बार दो हो रही है. Sir, could you please mute while you are doing this thing? सॉरी. आप जब ये कर रहे हैं उस वक्त म्यूट कर लें अपने आप को. हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके. हाँ,
चलो ओके, ठीक है, ओके, शुड आई गो अहेड? Yes, sir, please. Okay. So I have discussed the importance of muscle, how muscle is important in daily life, which include mobility, stability, posture, circulation, respiration, digestion, and childbirth. And the last one is vision. Okay, muscles responsible for clear viewing of the things. Okay, if there is any problem, you will not be able to see properly. Okay, as well as organ protection, temperature regulation. So muscle is going to protect our nerve, our visceral organ, as well as body is very important. That can be maintained by the muscle. एक फॉर्मूला शायद पढ़ा हो आप लोग क्लास जूनियर क्लासेस में, ग्लूकोज जब बर्न होता है C6H12O6 प्लस 6O2, जब ग्लूकोज होता है तो एटीपी बनती, एनर्जी बनती है, पानी निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में हीट निकलती है, और दैट हीट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है. सो वी कैन सी ओवर हियर द इंपॉर्टेंस ऑफ मसल, एंड मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all these things. Now I would like to tell you one important thing. If we divide our body, can be divided into 3 important tissues. अगर आप देखें तो बॉडी में एक मसल could be cardiac, smooth and could be skeletal. उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट टिश्यू क्या है? ब्लड में आप चाहे वो कोई फ्लूइड ले लें, और तीसरा बोन. तो हमारी बॉडी मोटे तौर पर we can divide our body into 3 different component: bone, blood and muscle. और हमको लगता है कि ये टिश्यूज एक बार बन गए तो खत्म नहीं होता. टिश्यू की एक लाइफ होती है. सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू बॉडी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू बॉडी का ब्लड है. ब्लड क्या होता है? 80% पानी होता है, प्लाज्मा. ओके, और 20% सेल होती है. कौन सेल होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. ओके, अब होता क्या है, इसकी भी एक लाइफ होती है. हर 120 दिन के अंदर आरबीसी मर जाता है और अब नया आ जाता है. यानी पूरी बॉडी का आरबीसी 120 डेज में रिप्लेस हो जाता है. एक वीक के अंदर, एवरी 1 वीक में होल डब्ल्यूबीसी डाइड एंड न्यू डब्ल्यूबीसी फॉर्म, एंड एवरी 5 डेज द प्लेटलेट्स डाइज एंड न्यू प्लेटलेट्स. का मतलब कि 5 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर पूरी ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मर जाता है और अपने आप नया ब्लड सेल्स बन जाती है. ये कब मरता है, कब बिगड़, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. हम कहते हैं, साइंटिस्ट कहता है, दिस होल ब्लड मेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. या हम कहते हैं अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम अपने हाथ में रखा है कि खून कब बनेगा, कब बिगड़ेगा. लाइफ लाइन, बच्चा पैदा होने से लेकर उसके मरने तक, चाहे वो अंबानी का ब्लड हो, चाहे वो किसी गरीब का ब्लड हो, अगर उसको ब्लड कैंसर नहीं है तो लाइफ लॉन्ग ब्लड बनना बिगड़ना चलता रहेगा और उसको कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज द होल ब्लड मेकिंग एंड blood destroying is controlled by autonomic nervous system. We don't need to do any extra effort. Okay, and जो नया ब्लड बनेगा उसकी क्वालिटी उसी पुराने ब्लड की 100% रहेगी. The second important issue of the body is bone. दूसरा टिश्यू बॉडी क्या है? बोन. हार्ड स्ट्रक्चर है. बोन को आप समझे ऐसे, जैसे हम छत बनाते हैं तो छत पे पहले हम आयरन की बिछाते हैं, फिर उसमें डालते हैं कंक्रीट. ओके, तो बोन भी इस तरह की है. उसमें होता है एक हिस्सा होता है कैल्शियम, एक हिस्सा सॉफ्ट बोन का, और 2/3 हिस्सा होता है कैल्शियम फॉस्फेट का. जैसे आप माने जो है आपकी है और कैल्शियम फॉस्फेट आपका कंक्रीट है, तो ज्यादा होता है तो उसकी मैक्सिमम सॉफ्ट बोन होती है, हिस्सा है. कैल्शियम फॉस्फेट कम होता है. जब बच्चा बढ़ना शुरू होता है तो उसकी बोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता रहता है, उसकी बोन अकड़ रहती है. बोन में कैल्शियम फॉस्फेट के जुड़ने से ही बोन में हार्डनेस आती है, जिससे कि हम जमीन के खिलाफ खड़े हो पाते हैं. और वो बोन में कैल्शियम फॉस्फेट का जुड़ना बहुत जरूरी है. लेकिन बोन में कैल्शियम फॉस्फेट को जोड़ने के लिए जो मेसन है, जो विटामिन डी, जो कैल्शियम फॉस्फेट जोड़ेगा लाके, वो विटामिन D3 है. और विटामिन किसी गिजा में नहीं है. विटामिन D3 जो है एक ऐसी विटामिन है जो कैल्शियम को बोन में जोड़ मजबूत करती है. अब यहां देखें कि वो विटामिन डी डाइट में नहीं है. उसके लिए क्या होता है?
वो विटामिन डी हमारी स्किन जब सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आती है तो विटामिन डी हमारी स्किन में बनती है। ओके, सो कंडीशन क्या है उसके लिए कि हर इंसान को अपनी बॉडी का 40% हिस्सा एकदम खुला रख के, ना वहां पे क्रीम लगाया, तेल लगाया हो, ना कपड़े पहना हो, गो इन द सन फॉर एटलीस्ट 15 मिनट अ डे। अगर आप धूप में सुबह की धूप में बैठते हैं और अपनी बॉडी का कम से 40% हिस्सा खुला रखते हैं, जहां पे आपकी बॉडी का स्किन का कांटेक्ट सीधे सनलाइट से हो जाए, यानी आपने अपने दिन भर की विटामिन डी का इंतजाम कर लिया। तो आई एम शोइंग यू कि विटामिन डी कहां बनती है? विटामिन डी बनती है हमारी स्किन में जब उस पर सनरेज का एक्सपोजर होता है। लेकिन जो विटामिन डी बनी स्किन में, वो विटामिन डी काम के नहीं होती। जैसे आपने सोना निकाल लिया खान से, लेकिन सोना एक मिट्टी का ढेर है, काम करें, अब क्या होगा? अब वो विटामिन डी जो बनी स्किन में, वो स्किन से मूव करके इट विल मूव किडनी एंड लिवर, एंड किडनी विल कन्वर्ट दैट विटामिन डी इनटू फंक्शनल विटामिन डी। जैसे कि खान से, और खान से फिर भेजा आपने सोनार के, फिर जाएगी सोना, तब जाके वो सोना पहनने लगे। तो यहाँ पे क्या है, स्किन जो है वो खान है जहां बनी, अब स्किन से निकल के वो जाएगी लिवर, किडनी, इसको बनाएंगे फंक्शनल विटामिन डी में, तब जाके वो विटामिन डी इस लायक कैल्शियम को हड्डियों में लगा सके। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को स्किन, कोई धूप में निकलता या पूरे में निकलता है, या किसी को लिवर डिजीज है, किसी को किडनी डिजीज है, तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाएगी, उसकी हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट नहीं जुड़ेगा। सो बोन हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? योर स्किन शुड बी हेल्दी, यू मस्ट गो इन द सन रेज, यू मस्ट हैव हेल्दी किडनी, यू मस्ट हैव अ हेल्दी लिवर। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है खासकर लेडीज में, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या करता है? सबको अच्छी चीजें बांटता है, उनकी खराब चीजें वापस लेके उसको बाहर निकालता है। लेकिन अगर कैल्शियम कहां जमा होता है? कि हड्डियों में कैल्शियम स्टोर है। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो कैल्शियम को हड्डियों से निकाल लेता है खून, है ना। कैल्शियम को हड्डियों से, आमतौर पर खून हड्डियों में जाके कैल्शियम जमा करता है। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो खून क्या करता है? हड्डी से कैल्शियम निकाल लेता है। तो खासकर ये हमारी फीमेल्स जो हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 50, they are going through hormonal changes every month, every 5 year, every 6 year, okay, every 2 year, because of pregnancy, because of menopause, because of misses, they are going through hormonal changes every year, and in more stress as compared to male. So stress is also causing hormonal imbalance. So because of these, females are having more weaker as compared to male. So हमें अपनी बोन को हेल्थी रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी बॉडी को कम से कम 15 मिनट पड़ेगा, हमें अपने लिवर को हेल्दी रखना पड़ेगा, हमें अपनी किडनी को हेल्दी रखना पड़ेगा, हमें स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच आर गोइंग आवर बोन। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू आई हैव टोल्ड यू ऑफ द बॉडी इज मसल। हमने कहा कि हमारी बॉडी का 40% हिस्सा क्या है? मसल का बना हुआ है। और मसल जिन ईंटों की बनी हुई है, वो ईंटें होती है मसल की 3 से 7 दिन तक। अच्छा नहीं कि मसल की बन गई तो बन गई। मसल जिन ईंटों की सेल, द लाइफ ऑफ मसल सेल इज मिनिमम 2 days एंड सेल डाइज मिनिमली इन 2 days एंड मैक्सिमली इन 7 days। अब देखना क्या है यहाँ पे? मसल हेल्थ इज टोटली बेस्ड ऑन यूज एंड डिसयूज। हमने देखा ब्लड में हमें कुछ नहीं करना है, बोन में हमें धूप में जाना है, स्किन हेल्दी रखना है, लिवर हेल्दी रखना है, लेकिन मसल हेल्थ इज टोटली ऑन यूज एंड डिसयूज। आपका रूट नॉर्मल है तो जितनी मसल सेल मरेगी अपने आप उतनी बन जाएगी, हाँ। तो आप दुबले होंगे ना मोटे होंगे। लेकिन अगर आपको चोट लग गई, आप बीमार हो गए, आपको प्लास्टर लग गया, तो आपका हाथ देखेंगे पतला हो जाता है या आप दुबले हो जाते हैं। दुबले बीमारी से नहीं होते, दुबले होते मसल की डिसयूज से, कि आप की बिकॉज ऑफ इमोबिलाइजेशन, बिकॉज ऑफ चलना फिरना बंद हो गया, आपका हाथ फिक्स हो गया, आपका पैर फिक्स हो गया, तो यू आर नॉट कर रही, तो होगा मसल पतली हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मसल। तो मसल एट्रोफी बिकॉज ऑफ डिस। और आप क्या करें? आप जिम चले जाएं, एक्सरसाइज को कर दें, तो आप देखेंगे कि मोटी होती जाती है, बढ़ने लगती है। क्यों? कि तो कमी वही थी, फिक्स थी, लेकिन बढ़ने की स्पीड बढ़ हो गई, एंड यू विल हैव मसल हाइपरट्रोफी। सो मसल हेल्थ इज टोटली बेस्ड ऑन यूज एंड डिसयूज। सो आई हैव टोल्ड यू इंपॉर्टेंट इश्यूज कि ब्लड में
अपने आप बिगड़ता रहेगा, बशर्ते कि कोई ब्लड की बीमारी ना हो पाए। बोन के लिए हमारा विटामिन डी जरूरी है, उसके लिए बताया कि आपको अपनी बॉडी को कम से कम 15 धूप में रखना है और आपकी बॉडी का 40% खुला हो। आपको कोशिश करना है फैटी लिवर ना हो, कोशिश करना है लिवर किडनी खराब ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो। अगर आप your bone will be healthy to the age of 100 have a weaker bone. Okay, and the third thing is muscle health is very important. So you have to use your muscle in all direction. आपकी जितनी मसल बॉडी में है उसको आपको इस्तेमाल कर, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मान लिया आपने, हमने कहा शुरू में कि हम लोग सेम काम करते हैं, होता क्या है सेम काम में एक मसल तो बहुत इस्तेमाल हो रही है, ओवर हो रही है तो वो स्ट्रांग हो जाए, और अगली मसल जो बैक साइड वाली है वो इस्तेमाल नहीं हो रही है तो क्या वो वीक हो जाएगी, एंड इट विल क्रिएट इम्बैलेंस। फर्ज करें कि आपको बंबू लगाना है, आपको बैम्बू को सीधा रखना है, जो रस्सियां बांधेंगे ऑल फोर साइड, द रोप शुड हैव इक्वल लेंथ एंड स्ट्रेंथ। अगर रस्सियों की लंबाई या ताकत कम ज्यादा हो गई तो बांस टेढ़ा हो जाएगा। सेम हमारी बॉडी भी एक बांस की तरह है, जिसको हमारी फ्रंट बैक और साइड मसल ने उसको इफेक्टिवली पकड़ा हुआ है, जिससे हमारी बॉडी सीधी है। अगर उनमें से कोई भी टाइट हो गई या वीक, अगली मसल अपने आप बॉडी को अलग खींच लेगी, आपका पोस्चर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल हेल्थ, यूज ऑफ द मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी शुड यूज मसल इफेक्टिवली। हमको पता चाहिए हमें मसल कैसे इस्तेमाल करना है। अगर मसल का इस्तेमाल गलत करेंगे तो मसल बनेगी तो, लेकिन मसल टूटेगी भी, और जब टूट के जुड़ेगी मसल वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी। हमको पता है हम लोग बुढ़े क्यों होते हैं, हम लोग बुढ़े इसलिए होते हैं कि एवरी डे वी आर डैमेजिंग आवर मसल फाइबर, और जब मसल फाइबर टूट के नए बनते, क्वालिटी के नहीं बनते, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो थोड़ा सा पहले से रिजिड बनते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है हम धीरे धीरे हमारी बॉडी अकड़ती जाती है और हम बुढ़े होते जाते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन द कॉमनेस्ट कॉज इन नाउअडेज लाइफ, हाउ these are causing problem in our muscle system. So the major culprit is abnormal stress, misalignment and imbalance in life. Okay, मानने में जो इतनी सारी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं उसका जो बड़ी वजह क्या है लाइफ में, स्ट्रेस। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, मिसअलाइनमेंट। आई हैव टोल्ड यू कि अगर कोई चीज का अलाइनमेंट सही नहीं है तो क्या होगा, जो अगर आपकी कार अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाए तो क्या होता है, जो व्हील घिस जाएंगी, क्योंकि एक तरफ घिसेगा बाहर साइड में, घिसेगा अंदर साइड में। तो अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंसिंग एंड प्रॉपर। अगर एक फॉर्मूला था फिजिक्स का, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, अगर एरिया ज्यादा है तो स्ट्रेस कम रहेगा, और एरिया कम है तो स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, है ना। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस concept one by one. Okay, factors leading to related musculoskeletal disorder. के जमाने में हम लोग हमारा जो सिटिंग स्टाइल जॉब है, एमएनसी जॉब है, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को प्रॉब्लम में ले जा रहे हैं। तो फैक्टर्स आर ओबेसिटी है, इनएक्टिविटी है, लोड कैपेसिटी इम्बैलेंस, मेंटल स्ट्रेस, बियरिंग इम्प्रॉपर repetitive work or overuse of substitutes, prolonged sitting, monotonous, constant, faulty posture and ergonomics. We will discuss in detail. Physical inactivity, overexercise or rest, painkillers or avoidance behavior. Next is the preferring curative over prevention. So here going to tell you, you can see that PPT, how obesity is going to put stress on the joint. Actually, we all are walking on the ground, and as per Newton's third law, every action has an equal and opposite reaction. Okay, so when we are on the ground is giving us equal weight back. जब हम जमीन में चलते हैं, मान लीजिए हमारा वजन 60 किलो है, हमने अपना पैर रखा जमीन पे 60 किलो का, जमीन हमको उतना ही, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो जितना वजन आप जमीन पे रखेंगे जमीन आपको उतना ही वापस, और एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। इट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फेज टू अदर फेज, वन प्लेस टू अदर प्लेस, और इफ एनर्जी इज अप्लाइड इन कंट्रोल्ड मैनर इट विल हैव बेनिफिशियल इफेक्ट, बट इफ applied in uncontrolled manner it will have a damaging effect.
फॉर एग्जाम्पल किसी की गाल पे हल्का रब करें, है ना, या पैट करें और उसी की गाल पे जोर से चला दें, आपका हाथ चल रहा है, लेकिन जब आपने स्लैपिंग, आपका हाथ का मूवमेंट अनकंट्रोल, आपने इसके तो आपका हाथ की मूवमेंट कंट्रोल है, तो इट विल, तो एनर्जी जब भी लगती है कंट्रोल्ड मैनर में तो फायदा करती है, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड है तो नुकसान करती है। तो हमारा बॉडी वेट जब बढ़ता है तो बढ़ने से क्या होता है कि किस तरह से हमारे ज्वाइंट पे लोडिंग बढ़ती है। आई विल टेल यू कि फर्ज करें कि हमारा बॉडी वेट, सपोज हाइट इज 5, my weight should be 70 kg, ideal weight should be 70 kg, but if my, इसका मतलब कि हमारा जो वेट है वो हमारे नॉर्मल वेट से 2 किलो ज्यादा है। सो इफ एनी वेट ऑफ 1 kg देन हिज आइडियल वेट, जो वेट होना चाहिए उससे अगर 1 किलो ज्यादा है तो उसके घुटने पे स्ट्रेस डबल हो जाएगा और एंकल जॉइंट पे किसी है। तो अगर 1 किलो से ज्यादा होगा तो घुटने में वजन 2 किलो बढ़ जाएगा और एंकल जॉइंट पे वजन 4 किलो बढ़ जाएगा। किसी का वजन अगर उसकी नॉर्मल वेट से 10 किलो ज्यादा है तो घुटने में वजन 20 किलो बढ़ जाएगा और एंकल जॉइंट पे 40 किलो बढ़ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर बने थे वो हमारे नॉर्मल बॉडी के लिए बने थे, बिकॉज ऑफ पोर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ पोर डाइट हैबिट, बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, हमने अपनी बॉडी का वेट, और जब बॉडी का वेट बढ़ा लिया तो वेट जितना बढ़ा उसका 2 गुण घुटने पे और 4 गुण पे जा रहा है। जाहिर सी बात है, कार ने उसमें 1 लोग चले, उसी कार में 6 लोग चले बैठ के, तो लाइफ ऑफ कार विल बी डिफरेंट हो गए। सेम लेयर कि अगर उस ज्वाइंट पे जो बना था 50 किलो वजन लेने के लिए और 70 किलो वजन पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, हो जाएगा। तो वन ऑफ द कॉमन रीजन musculoskeletal problem nowadays. Obesity of 1 kg overweight put 4 kg extra load on knee. कि how obesity is going to increase loading on the and in कि अगर हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो, ज्यादा हो गई, going to affect not only joint and muscle but also affecting our lungs, our skin, our muscle and joint, intestine, bone and other organ. Every is being affected because of inactivity. अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है, आपको, है ना, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, है ना। बोन्स हेल्थ के लिए बोन पे लोड डालना जरूरी है। अगर आप बोन पे लोड नहीं डालेंगे, चले फिरेंगे नहीं, तो बोन विल बी ऑस्टियोपोरोज्ड। बोन की हेल्थ के लिए उस पे लोड डालना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लोड एंड कैपेसिटी मिसमैच। ओके, कि हमारी बॉडी, आई हैव टोल्ड यू कि हमारी कैपेसिटी काम कितना है। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम लोड एंड कैपेसिटी मिसमैच। ओके, कि आर बॉडी की परफॉर्मेंस हमारे जॉब की है, तो जब तक हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट बॉडी की परफॉर्मेंस को मैच नहीं करेगी, वी विल ऑलवेज इंटरप्ट। आई वुड लाइक टू गिव यू वन वेरी कॉमन एग्जांपल। नाउअडेज इट इज वेरी कॉमन फैशन एंड यंगस्टर टू जॉइन जिम। हमारे पास क्लिनिक में हर महीने में 10-15 बच्चे जो इंजरी लेके आते हैं एंड मूविंग इन एमसीज, कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजर है। अब जब उसकी पूछेंगे एक्टिविटी तो वो कहता है मैं तो ऑफिस में 10 घंटा बैठा होता हूँ इसी चैम्बर। तो जब बैठा होता है ऑफिस में तो काम कर रहा है बैठ के, हेल्थ कॉन्शियस है, सुबह जाके जिम में 2 घंटे वो वेट ट्रेनिंग कर रहा है। तो नॉट गो फॉर दैट वेट ट्रेनिंग। आई विल, हमारी बॉडी में जो मसल है ना, हमारी बॉडी मसल 2 तरह की होती है। जैसे घर बनती होती है, बड़ी पतली होती है, बड़ी होती है, तो उसी तरह से हमारी बॉडी में 2 तरह की मसल है। एक मसल छोटी साइज की है, एक मसल बड़ी साइज की है, साइज में बहुत बड़ी है। तो हम उसको बोलते हैं अपनी साइंस में कि रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर छोटे साइज के होते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं लेकिन हल्के काम कर सकते हैं, और फाइबर बहुत बड़े साइज के होते हैं, भारी काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग काम करते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं। अगर को देखें तो अभी क्या हुआ कि हम चाहे कहें कि अल्लाह ताला ने बनाया या हम कहें हजारों लाखों साल
मेंस वी आर इन्वॉल्व इन हैवियर वर्क, मेल्स इन्वॉल्व इन लाइटर वर्क। तो बॉडी में स्मॉल सेल बहुत मसल है, उसमें 80 छोटी साइज की है और 20% सेल बड़ी साइज की। मेल की बॉडी में क्या है, 80% सेल जो है वो बड़ी साइज की, 20% सेल छोटी साइज की। आदमी जो काम करता है भारी काम, तो हमने कहा छोटी से हल्के काम करती है, लेकिन फर्क क्या है, छोटी काम बहुत देर तक बिना थके कर सकती हैं और बड़ी सेल भारी काम कुछ देर के लिए थक जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, अचानक जो ट्रेंड चेंज हुआ उसमें मेंस आर आल्सो इन्वॉल्व इन लाइटर। आदमी को भी बैठ के काम करना है 8 घंटे 10 घंटे, हमें नहीं है, हमें कुली काम तो करना नहीं है, हमें काम करना है, हमें हल्के काम कंप्यूटर पे, ऑफिस में, गाड़ी में, कार में बैठ के बहुत देर तक अपनी बॉडी को संभालना है। ओके, तो एट दिस टाइम वी डोंट नीड मोर पावर, मोर स्ट्रेंथ, वी नीड मोर एंड्योरेंस, एंड फॉर एंड्योरेंस वी नीड मोर स्मॉल सेल। अब चाहिए ना, इसमें जो सेल होती है खाली साइज बदलती है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी छोटी सेल बड़ी बदल जाएगी, आप एरोबिक्स छोटी सेल में, दीज सेल कोई नई सेल नहीं बनती है, उसमें इंटरचेंज होता है, डिपेंड अपॉन ट्रेनिंग। अगर आप एरोबिक्स करोगे तो बड़ी सेल बदल जाएगी छोटी सेल में, और अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे छोटी सेल बदल जाएगी। अब हमने कहा कि आज के जमाने में जो मेल्स की रिक्वायरमेंट के शुड है मोर, लेकिन बॉडी क्या है उनके, दे हैव मोर लार्ज सेल बिकॉज ऑफ एडाप्टेशन, बिकॉज ऑफ जेनेटिक चेंजेस रहा। उनको जरूरत है, दे शुड हैव मोर एंड मोर स्मॉल टू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम इन द कंप्यूटर। गलती बोलो, वो जाके जेट ट्रेनिंग करते हैं कि गलती उसको बढ़ रहे हैं। कभी आपने देखा अगर कोई लेडी कितना जिम कर ले, कभी उसके हाथ में इतनी मेल में आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि लेडीज की मतलब ऑलरेडी छोटी होती हैं, जब तो थोड़ा बड़ी होंगी नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन मेल क्या होता है, ऑलरेडी बड़ी हो गई। तो इसीलिए आज they should not, if they want to be fitter, they should go for the aerobics like swimming, like cross training, like cycling। हल्की एक्सरसाइज करनी है देर तक, जहां पे आपकी बॉडी में स्मॉल एंड्योरेंस सेल बड़े हैं, जिससे कि आप बिना काम करें। एंड शुड नॉट गो फॉर वेट ट्रेनिंग, शुड गो फॉर स्ट्रेचिंग, मीन मसल फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। क्यों फ्लेक्सिबल हो? क्योंकि आप ट्रेवल करते हैं कार में, क्योंकि आप बहुत देर बैठे होते हैं। अगर आपकी बॉडी any episode of this is the load capacity mismatch, कि अगर हमारी बॉडी नहीं है तो आई शुड गो फॉर मोर एंड्योरेंस। अगर हमारी बॉडी को पूरे काम करना है तो शुड गो फॉर वेट ट्रेनिंग। हमें पता नहीं होता है, एवरीबॉडी इज गोइंग बिहाइंड द वेट ट्रेनिंग, बॉडी बन जाए अच्छी सी, दिखे अच्छा दिखे, लेकिन और इसमें प्रॉब्लम होती है। जो लोग जिम करते हैं ना, दे बेसिकली फोकस ऑन द फ्रंट, कि आगे चेस्ट अच्छा अच्छी बन जाए, बाइसेप्स अच्छी बन जाए, और उसके कंपैरिजन वाली मसल इग्नोर हो जाती है। हमने कहा ना, एक बांस अगर सीधा खड़ा है तो उसको अगर आपको सीधा रखना है, तो जो रस्सियां चारों तरफ की वो बराबर हैं, बराबर ताकत की, बराबर लेंथ। लेकिन अगर आपने एक रस्सी को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो अगली कमजोर हो जाती है। तो आज के जमाने में जो बड़ी प्रॉब्लम लोगों में और रही है कि जो लोग जिम करते हैं बिकॉज ऑफ शो ऑफ, दे मेनली फोकस इन द फ्रंट, कि आगे की मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए, पीछे की मसल को वो भूल जाते हैं, and it is causing imbalance, and they came up with the low back pain, disc, etc. Load and capacity mismatch is very important problem nowadays. So whenever we are going to join any job, I should consult a physiotherapist or a physical trainer who could teach me what is of my job. I could train, I could make my body fitter as per the requirement of my job. Next, I have told you, stress बहुत बड़ी चीज है। Your brain is at work. I have told you earlier कि brain is the boss of the body. Brain is the boss of the body. और हमारी बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है, वो सिर्फ चाहे वो अंबानी हो चाहे रिश्ते वाला हो, सबकी बॉडी में जो खून का अमाउंट है, और काम का खून इज द ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन, जो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ले जाता है, गंदगी को वापस लाके किडनी और लंग्स के निकालता है। ठीक है, तो ब्लड इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन। अब कहां कितना ब्लड जाएगा वो डिपेंड करता है उस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस पे। जो स्ट्रक्चर ज्यादा काम करेगा वहां ज्यादा खून जाएगा, जो कम काम करेगा वहां कम खून जाएगा। बराबर ये फिक्स 5 लीटर बढ़ेगा नहीं। अब जो लोग ज्यादा काम दिमाग से करते हैं,
एक रिसर्च कहती है कि अगर एक इंटेलेक्चुअल टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट, तो जितना आपको खून चाहिए काम करने के, उतना खून दिमाग, तो दिमाग को जितना खून चाहिए आधे घंटे में, जितना खून चाहिए अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं दिमाग को, उतना खून चाहिए 12 घंटे में। तो ब्लड फॉर द ब्रेन, और क्योंकि ब्रेन बॉडी का बॉस है, अगर बॉस को कुछ चाहिए तो बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोगों का हिस्सा कम कर दिया जाएगा। अगर बॉस को पर यूनिट ज्यादा खून चाहिए, लिमिटेड है, क्या होता है, अगर सप्लाई ब्रेन की बढ़ानी है तो क्या होगा, बाकी जो इलाके, हाथ, जो कम इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, उनकी सप्लाई ब्लड की कम करके ब्लड की सप्लाई ब्रेन को। और ब्रेन कब काम करता है, जब आप कुछ स्ट्रेस, तो इस वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ कॉजिंग प्रॉब्लम ऑल ओवर द बॉडी, चाहे वो हार्ट, लिवर, लंग, किडनी हो, क्योंकि जब क्या होगा, ज्यादा खून सप्लाई हुआ ब्रेन को तो बाकी को कम मिलेगा। अगर एक कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपकी दिमाग ज्यादा काम कर रहे हैं तो क्या होगा, बाकी लोगों को जब रोज खून कम मिलेगा दे जाएंगे, और आपको जो प्रॉब्लम आजकल शहरों में हो रही है उसका क्या है, स्ट्रेस है। योर ब्रेन इज कंज्यूमिंग मोर ब्लड and causing deficiency of blood in other areas, and the other areas are getting lesser blood every day, so they have become weaker, they become diseased. Okay, so the stress is causing problem in muscle weakness, system, skin problem, mouth problem, heart problem, lungs problem, and reproductive system. So the mental stress is also another great causing problem in almost all of the structure of the body. इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, थोड़ा कम हो गया। पहले एक बड़ा फैशन था, when you are wearing high heel, you are changing the center of gravity. अचानक क्या होता है, आपकी बॉडी ऊपर जाती है, और जब पेल्विस यहाँ पे आपकी स्पाइन गिरती है ना, हिप बोन पेल्विस आगे गिर जाएगी, क्या होता है, अलाइनमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट, कि अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट. But if there is a misalignment, the weight distribution of body is altered, and it can lot of problem body. So high heel wearing your whole body posture, and then it can lead to ankle, hip, and spine. And I can deliver a separate topic. Okay, is prolonged repetitive strain injury. Suppose you will be observed long time in a posture, sometimes you have feel tingling, लगता है पैरों में झिंझुनी हो गई बहुत देर तक, कभी किसी ने फील किया है? उसका रीजन क्या होता है, when we are मसल का, हमने कहा ना, मसल इज रिसीवर, मसल में खून आता है, और आर्टरी खून सप्लाई का जो रूल है, सप्लाई का एक बेसिक रूल क्या है कि ऑलवेज सप्लाई फ्रॉम द हायर साइड टू लोअर साइड। आर्टरी के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, जहां से खून बह रहा होता है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, और मसल के अंदर कम होता है। इजिली हाई प्रेशर साइड से पेशेंट को ब्लड आता है ना। हमने कहा मसल का प्रेशर कम है, आर्टरी का प्रेशर ज्यादा, हार्ट पंप कर रहा होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में आराम से खून मसल को मिलता रहता है, नर्व को मिलता रहता है। लेकिन आप दबा 6 घंटे, अब आपकी मसल दबी रही, नर्व दबी रही, जब मसल क्या होगा, यू विल हैव गया मसल में या नर्व में, तो क्या होगा, क्या पाएगा, नहीं पाएगा ना, क्योंकि हमने कहा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हाई एंड टू लोअर एंड, कभी लो से हाई नहीं जाएगा, कभी भी पानी बे ऑफ बंगाल से हिमालय को नहीं जाएगा, हमेशा पानी हिमालय से बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हिमालय हाई लेवल पे और बे ऑफ बंगाल, सो ऑलवेज टू लो साइड, हाई प्रेशर इन आर्टरी एंड लो प्रेशर इन मसल एंड नर्व, द ब्लड इज इफेक्टिव artery to muscle and nerve, and they are getting nutrition. In case of prolonged sitting, what happens? The muscle or nerve may be compressed. So because of prolonged compression, they may have increased, and because of increased pressure, they will not be able to get sufficient blood from the artery. And when they didn't, they give you numbness, pain. कभी किसी ने आप समझ होगा, जब भी बहुत देर तक कहीं बैठ जाते होंगे, आपको लगता होगा पैरों में कि सब टिंगलिंग होने लगती है। ओके, so in economics, this slide, I will show you one slide from a person is using mobile. In the diagram,
on head angle is 0 degree. Okay, it means head is directly straight over the neck. Are you seeing the slide? Hello, slide visible? Beta? Yes, yes, it's visible. So if you see here, if I am 0 degree, my neck is 12 pound. Okay, and when my neck tilted degree, the load has become 20. The load has been increased on neck more than double. At 30 degree, the load on neck is 4. At 45 degree, the load on neck is 49 pound. And at 60 degree, the load on neck is 60 pound. Your patient is mobile, okay? But only by changing the neck flexion. जब गर्दन सीधी थी, कितना वजन था? 10 से 12 पाउंड, जो कि हमारे सर का वजन होता है. तो हमने क्या किया, जब गर्दन झुका लिया आगे को, तो इसी गर्दन पे कितना वजन पड़ रहा है? 60 पाउंड, यानी मोर देन 5 टाइम्स. ओके, तो 5 गुना वजन पड़ रहा है गर्दन पे. जाहिर सी बात है, जब किसी स्ट्रक्चर पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वेट पड़ेगा तो हेलो, हाँ बेटा, हेलो, हेलो. Dr. Mahbub, do you Should I have any continue? question? Sir, you can continue because I think. Okay. So I'm going over here. You can see only by changing the posture, how the loading has been increased 5 times, and if something is loaded at a capacity of 5 more, it will damage early. Okay. The next diagram you can see over here. This I have told you, this is a very common problem nowadays among youngsters. So you, when I am lying straight, my disc is having 25% pressure of the body weight. When I am lying in side position, my disc is having 75% load. When I am standing erect, disc is having 100% load. These are the safest position. But if I am bending down, you can see the load has turned 150. When I am lifting something, load has become 220. When load is 140%. When chair 125%, and lifting something by sitting on chair, the load is 275. So we should try to avoid all these positions, okay, because these positions are going to put excessive stress on the disc, okay. And this is a gel filled balloon between two bones which act as a shock absorber. Shock absorbing capacity of this is because of this gel inside the disc, okay. करेंगे, झुक के हाथ उठाएंगे, से वो जेल निकल जाएगा और आपको डिस्क, एक तो जेल निकलेगा, you will have back pain, you will have leg pain, and sometimes you may have paralysis, as well as you have lost the capacity of shock absorption of the disc, okay. So you have put your disc, okay. So poor posture is one of the commonest cause of putting exertion over the joint, over the disc, over the spine. So we should go and we should try to avoid those positions which are going to exert more pressure on our disc and other bony structure, okay. Then come to the prolonged sitting, okay. Most of the problem, sitting equates to smoking. Here, sitting is more dangerous than smoking. Sitting is the cause of heart disease. Prolonged sitting is cause of diabetes. Prolonged sitting is cause of metabolic syndrome. Sitting is cause of cancer. Prolonged sitting is cause of back and neck pain and other orthopedic problem. Okay, the research says sitting is more dangerous than smoking, which causes heart disease, diabetes, metabolic syndrome, cancer, spinal pain. We can see over here the detrimental effect of sitting. Okay, so how can we counter? Suppose we are involved in sitting job. So one thing we can do, every hour we will get up from the chair, step walk, stretch our body and sit. अगर आप खाली इतना करते हैं, खड़े होना है, अपनी बॉडी को टंगा लेना है और in your bony and musculoskeletal health, okay, even this give you regeneration, okay, it will refresh you. Just for example, आप दौड़ रहे हो कहीं पे,
अगर आप दौड़ते रहेंगे तो आप एक रास्ते जाके गिर जाएंगे, लेकिन आप 2 मिनट बैठ जाएं और फिर रन, ओके, नेसेसरी. तो whenever we are working in, we should take at least break every hourly, and at least 2 minute break is required. If you will inculcate only 2 minute break in your lifestyle, okay, you will see marked difference in your health, okay. So over or wrong exercise, हमने कहा ना कि में wrong exercise is more dangerous than not exercising, okay. आप ना एक्सरसाइज करें वो बेहतर है बजाय करें. हमने गलत एक्सरसाइज करी, होता क्या है हमारे ना, वो हर दिन टूटते और बिगड़ते रहते हैं. हमारी बॉडी में कोई चीज परमानेंट नहीं है, वो बनती है और बिगड़ती है, लेकिन कुछ चीजें उसी क्वालिटी की बनती है. हम बोलते हैं these tissues are healed by regeneration. कौन कौन से हैं? स्किन, ब्लड, बोन एंड नर्व. स्किन, ब्लड, बोन. अगर ये टूट तो जो नई बनेगी मसल, स्किन और ब्लड और ये बनेगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी उतनी अच्छी, उतनी ओरिजिनल जितनी पहले थी, यानी रीजनरेशन. लेकिन जो अदर इश्यूज हैं, मसल, फेशिया, बर्सा, है ना, ये टूटते तो हैं लेकिन हील होते हैं रिपेयर से. रिपेयर क्या होता है? रिपेयर का पुअर क्वालिटी. समझिए से आप कि जमीन से मिट्टी भर दी, तो दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. लेकिन जमीन से मिट्टी निकाले कूड़ा भर दीजिए, आपने अच्छी क्वालिटी की मिट्टी निकाल के कूड़ा भर दिया, आपको गड्ढा भरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसको क्वालिटी नहीं आ पाएगी. लिगामेंट, टेंडन जब टूट के बनते हैं तो उनमें वो लचीलापन, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक्सकर्शन, वो इलास्टिसिटी नहीं आ पाती है ना. तो हम जब गलत एक्सरसाइज करते हैं, या आप लोग जो लोग बहुत दिन बाद खेलते होंगे ना, तो यू मे फील इवनिंग और नेक्स्ट डे. जितने लोग भी स्पोर्ट्स खेलते होंगे, कभी एक्सरसाइज होगी बहुत, यू कैन डू इट, ओके, बट द सीवियर पेन योर बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड एज डू. ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं थी, हमने परफॉर्म कर दी और हमने कुछ सारे मसल फाइबर तोड़ दिए. इतने नहीं टूटे कि हम बिठा दें, लेकिन इतने धक्का देंगे, लेकिन जोड़ने की बात क्या होगा, उनको क्वालिटी नहीं आएगी. इसी तरह अगर हम एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट बट rather than us more and more damage, okay. अब क्या इंडिया में कि whenever we are immediately using painkiller, है ना, जिसने पेनकिलर बनाया उसने छोड़ दिया. वेस्टर्न वर्ल्ड में दे डू 95% पीपल अभी भी हैं कि whenever they are having any kind of pain they are going behind painkiller. और दूसरी बात क्या है कि pain is not a disease, pain is an informer informing you something is wrong in your body. आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चला है और पेन के जरिए, बुखार के जरिए वो आपको इन्फॉर्म कर रहा होता है. यानी कि पेन बीमारी का हम क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मर को ही मार देते हैं. सो दिस नॉट ट्रीटमेंट, दिस इज मास्किंग ऑफ द प्रॉब्लम. हम अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं. अगर हम अपने इन्फॉर्मर को, वी आर पुटिंग आवर बॉडी ऑन मोर. सो पेन किलर एक तो क्या करता है नुकसान, कि जो हम अलार्म दे रहा था कि गड़बड़ है, उसको ठीक करने के बजाय पेन ठीक कर दी. प्रॉब्लम को रेट करते हैं पेन से, कि पेन ज्यादा तो प्रॉब्लम ज्यादा, पेन कम तो प्रॉब्लम कम. कि ऐसा नहीं, कैंसर कोई नहीं, वहां पेन नहीं होता, शुरुआत में पेन नहीं होता. और क्या है, छोटी प्रॉब्लम है ना, कोई बाल खींच ले, छोटी प्रॉब्लम, पेन बहुत होता है. तो पेन, sometime pain is severe but problem is lesser, sometime pain is not there but problem is severe. So we should not rate our problem on the basis of pain. We should not try to cure the pain. First of all, whenever we any signal of pain, we should try to diagnose the problem, the reason. We should consult a doctor, physician, physiotherapist, or whoever whom I'm having faith. I should go to them and ask them to diagnose the cause. Don't try to treat the pain, okay? एक तो नुकसान. Secondly क्या है, painkiller are used relief from pain. They give you if taken accordingly. But if they are misused, they can be harmful. And some of the side effect we all are knowing. Delirium है, sedation है, swelling है, kidney problem है, liver है, GI system problem है, अल्सर है. पेन किलर की बहुत सारी नुकसानात हैं.
फायदे कम है। तो ट्राई टू अवॉइड द पेन किलर अंटिल मेकिंग यू डिसेबल। ओके, अगर आपको पेन बिल्कुल डिसेबल कर रहा है तो आप पेन किलर लिए, बट should try to find out the cause of pain to treat. Prevention is better than cure, especially when something has no cure. Okay, so हमने क्या कि मसल टूटती कब है, नहीं है, but if we are regularly involved in flexibility training, stretching, okay, then we can go for the high impact training, but we will not have a injury. Prevention, हम रेगुलर एक्सरसाइज अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हैं, प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, तो दैट इज मोर बेटर। बीमार होने से अच्छे बीमारी ना हो, वी शुड फॉलो द मोर एंड मोर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली पूरा मिसमैच से, स्ट्रेस से, ओबेसिटी से, इनएक्टिविटी से, साइज रॉन्ग साइज से। सो which I have discussed you, most of them are relying on pain. Painkiller should be only used when you are not able to perform your activity. Try to cure the pain for timing only. You should physician or surgeon or therapist to find out the cause of pain, to treat the cause of pain. So अगर हम बात हैं manage, we manage it. So I have told you with the help of fitness of muscle only. As I have shown you, muscle health is linked with the nervous system because 20% body power generator lying in the muscle, okay, and that energy is running on body, चाहे वो heart हो, liver हो, lung हो, kidney हो। तो muscle जब core है, when the muscle is core, so we should try to find out the treatment in the muscle. So muscle is the core in the etiology and management of musculoskeletal disorder. Mean what is the problem and management mean management the problem. Okay, मसल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मसल की प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, कि मसल पे आप मूव, मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड एंड मसल इज इलास्टिक। ओके, ये मसल की प्रॉपर्टी है। मसल जितना स्ट्रेस इन, तो आप गद्दे पे कितना, आप मैट्रेस पे कितना भी कूदिए ना, आपको चोट लगी ना आपका बेड टूटे, लेकिन अगर आप फर्स्ट पे कूदेंगे क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी, है ना। फर्क क्या है, मैट्रेस फ्लेक्सिबल था, इसीलिए जंपिंग के बावजूद भी वहां कोई इंजरी ना आपको हुई ना मैट्रेस को हुई, लेकिन जब फर्स्ट पे कोई हार्ड था। तो इसी तरह अगर मसल फ्लेक्सिबल है, मसल इलास्टिक है, तो यू विल यूज मसल अप टू एनी एक्सटेंट, you can go for any range, you can activity, it will not cause injury. But if you lost the flexibility of muscle, you will predispose your body injury. एक चीज और है, खासकर यंगस्टर्स में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल खतरनाक है ना। प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल 12 recreationally at one leg immobilized for 2 weeks। क्या किया, उन्होंने किया कि उनके 12 लोग एक्टिव यंग लोगों के पैर को 2 हफ्ते के लिए इमोबिलाइज कर दिया, यानी इमोबिलाइज मतलब कि कर दिया। एक रिसर्च करा कि यंग लोगों के पैर को 2 हफ्ते के लिए इमोबिलाइज कर दिया और देखा कि क्या, देखा कि उनकी मसल 8.4% कम हुई। जब मसल गर्थ नापा तो मसल और मसल की स्ट्रेंथ नापा तो उनकी मसल 22.9% कम हो गई और मसल रिस्पॉन्स था वो 31% कम हो गया। सिर्फ उसने मसल को इस्तेमाल नहीं किया और यंग लोग थे, डायनेमिक लोग थे, तो देखा उनका वो 22.9% कम हो गई और मसल की प्रोटीन सिंथेसिस कैपेसिटी 31। 2 weeks of leg immobilization is used to decrease muscle strength and higher than normal protein intake may be required during the immediate muscle disuse to accommodate for the so, जब भी हम जो है किसी बीमारी से उठे या किसी इमोबिलिटी, तो we should try to increase the protein uptake because protein is the body building tissue. Okay, हम बात करते हैं कि कॉमन मस्कुलर डिसऑर्डर क्या है जो है।
जो सिटिंग जॉब प्रोफेशनल हैं उनमें आज के जमाने में कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्क बल। यू कैन सी इन द डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम शोइंग नॉर्मल डिस्क टूटना शुरू हुई और उसके अंदर जेल निकल आया, ठीक है। तो डिस्क प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम नाउअडेज। शियाटिका बोलते हैं, डिस्क बल्ज बोलते हैं, जो आज के जमाने में बहुत कॉमन है। सेकेंड कॉमन कार्पल टनल सिंड्रोम, जो लोग कंप्यूटर काम इवन आफ्टर प्रेगनेंसी और इवन आफ्टर द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम, मोबाइल लैपटॉप, दे मे हैव प्रॉब्लम इन रिस्ट एंड हैंड, टिंगलिंग नंबर्स होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज के जमाने में है। थर्ड वन इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। यू कैन सी द डायग्राम, एक बिल्कुल स्मूथ है, अगर ज्वाइंट देखो कार्टिलेज घिसने लगा है ना। फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम है ना, ब्रेन प्रॉब्लम है, लेटरल टेनिस एल्बो प्रॉब्लम है। आज के जमाने में कंप्यूटर प्रोफेशनल में ये सारी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एंड दीज प्रॉब्लम्स आर अफेक्टिंग फ्रॉम यंगर। So how physiotherapy is going to help them? Okay, physiotherapy exercises, how we are going to prevent all these musculoskeletal in the population. One important thing I have to discuss also regarding ladies. Okay, if you go through the literature, you see older age, most of the ladies are having average 5 to 6 kids. Okay, हर लेडी को कम से कम 4 से 5 बच्चे होते थे, है ना, and they remain active throughout the life. घर के काम करती थी, आटा बनाना है, but most of the work was done by the ladies only. और बहुत सारी ladies were not involved in only housework, they were involved in farming work, especially in rural areas. जो ladies थी वो घर के साथ साथ बाहर काम भी करती थी। साथ में क्या था, lady was going through delivery of 5 kids, no matter which, हिंदू हो मुसलमान हो, खास एरिया में देखें, अगर जाएं अपने रूरल एरियाज में देखेंगे कि 30 साल पहले हर लेडी को जो हिस्ट्री थी 5 से 6 बच्चों की हिस्ट्री थी, उनमें नेक पेन कोई हिस्ट्री नहीं थी। अभी क्या देखो, नाउअडेज क्लिनिक में होता है, लेडी इज कमिंग टू पेन बहुत और बैक पेन हो गया। तो ऐसा क्या हो गया भाई, जबकि आज के जमाने डाइट, अभी अगर डाइट कंपेरिजन, they are getting good diet, they are having better consultation during, चीज जो है वो सुपरवाइज होती है, पहले सुपरवाइज नहीं था। फिर क्या ऐसा हो गया कि 6 बच्चों के बाद भी बैक पेन नेक पेन नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेक पेन। मोस्ट कॉमन रीजन इज रेस्ट। ओके, होता क्या था, पहले जमाने लेडी को डिलीवरी होती थी तो 6 वीक के लिए उस लेडी को कंप्लीटली आइसोलेट करते थे, उनकी मसाज होती थी 2 से 3 बार घर दिन में, और साथ साथ में they have been given herbs and dry fruit as a nutrition diet for 6 weeks। को चलना फिरना अलाउ नहीं था। होता क्या है कि डिलीवरी के 3rd ट्राइमेस्टर लेडी की बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल क्या करता है कि दैट केमिकल इज गोइंग द होल बॉडी, कर देगा, बोन को लूज कर देगा, जिससे कि बेबी प्रेशर न बढ़े, है ना, बेबी शुड नॉट कम। और वो जो लूजनिंग होती है उसके में रिलैक्सिंग की वजह से आफ्टर डिलीवरी द बॉडी टेक 6 स्ट्रेंथन ऑल दीज लूजन स्ट्रक्चर। बॉडी को कम से कम 6 हफ्ते की जो चीजें लूज हो गई, ढीली पड़ गई हैं, उनको टोन अप होने के लिए कंप्लीट रेस्ट चाहिए। उस 6 हफ्ते में लेडी शुड नॉट स्टैंड अप, लेडी शुड नॉट वॉक, वो जरूरी है, और दे शुड मसाज। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, and the lady is responsible for everything of the baby. Some of them are going through cesarean section. तो क्या होता है कि ना उनकी मसाज हो पाती है, ना उनको रेस्ट मिल पाती है। जैसे आपकी लिगामेंट लूज थे, आप खड़े हो गए तो लूज ही रह गए वो, है ना, बॉडी लूज ही रह गई। तो when you structure delivery, you are because you are bearing weight on the joint पे नहीं होता, और लाइफ टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है। So the advice is in your neighborhood, your relatives who they should follow at peak rest, okay, if possible, so they regain their normal strength and tissues which has been loosened, because they should not have all these complications in the future. So I am going to discuss the role of physiotherapy in prevention of all these things. Physiotherapy क्या है? Important is prevention, कि we have to prevent among the
youngster, office worker, teacher, student, they should not encounter with all these musculoskeletal problem, and then they could have problem in future. So education about sitting, about working, about traveling, about exercise, going to educate people every aspect of their lifestyle. So we could teach what to do and what not to do, and how you can prevent over exertion of your joint, your muscle, your ligament and tendon. Okay. Next one is the ergonomics. Ergonomics is a branch where you are not going to change the body, but you are going to change environment, your chair, your desk, your computer position. Okay. We are going to advise you each and everything, so you could exert less body tissues while working on the office. Then postural awareness. Okay. How to sit, how to stand, how to walk. We are going to advise in each aspect. Postural maladies cause of development of musculoskeletal disorder. Next, muscle performance and training. Okay. What is muscle? We should train the muscle as per the job requirement of the person. Okay. किसी endurance का तो हम उसको endurance training कराएंगे, किसी को sitting के लिए train कराएंगे. We will train the person's body as per requirement. Next one is balance. Okay, balance is very important. If there is even if you call alignment is altered, your car will have accident, your car will have damage to and tire. Okay, same here, body balance is important. Balance means there should be equal strength from the front and back muscle. Nowadays what is happening, because of हमारा पेट निकल आया, पेट की मसल वीक हो गई, बैक की मसल टाइट हो गई, पूरा स्ट्रेस कहां पे गया, स्पाइन पे आ गया, बैलेंस हो गया, आगे वाली मसल वीक हो गई, पीछे वाली मसल टाइट हो गई, तो जो हमारी बैक की स्पाइन थी वो उसमें स्ट्रेस पड़ा और वो खराब हो जाएगी. तो जॉइंट अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन द जॉइंट इज अलाइंड, लुब्रिकेशन में होता क्या है, जो अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, जॉइंट को जो न्यूट्रिशन मिलता है one bone came with the contact of other bone, they exchange. Okay, so if they are properly aligned, they will have contact. If they are not aligned properly, तो हड्डी झुक गई, तो क्या होगा, अलाइनमेंट हो नहीं पाएगा और ज्वाइंट का न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा, और अगर ज्वाइंट का न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा तो ज्वाइंट will go for the degeneration and damage. Okay, so we as our preventive aspects, ergonomics, awareness, muscle performance training, balance training, joint alignment and lubrication. The second is, suppose if anyone is having problem, okay, so what intervention we would offer. So first is optimize. हम क्या करते हैं, optimizing the healing of injured through machine exercises and different techniques. Okay, होता क्या है कि हमने कहा कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज टूटते हैं, तो टूट के जब हील होते हैं, उनकी वो क्वालिटी नहीं आ पाती. तो अगर उनको आप अपने आप हील होने दें तो क्वालिटी और खराब हो जाएगी. फर्ज करें कि आप एक देखें घास, यह गार्डन में घास है और वही घास जंगल में है, दोनों घास है, लेकिन जो गार्डन घास है आपको अच्छी दिखती है, जंगल की घास आपको खराब दिखती है. फर्क क्या है, गार्डन की जो घास है, इट हैज बीन अलाउड टू गो इन कंट्रोल्ड मैनर, whereas the grass jungle has been allowed to go in uncontrolled. So even after injury, if you have been guided the guidance of the therapist, so they will allow you to promote optimal healing. Okay, that is a different topic that could be discussed sometime else. But I'm saying, if something is healing through the supervision of the proper physiotherapist, structure to heal optimally. But if you are healing control, they could be fine. ऑप्टिमली हील करने में बेस्ट हील करते हैं. अगर मान लो किसी वजह से वो स्ट्रक्चर ऑप्टिमली हील नहीं हो पाया, तो हमारा सेकंड सजेशन क्या होता है, वी प्रोड्यूस कंपनसेशन इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एडजेसेंट एंड अदर स्ट्रक्चर. मान लो हमारा घुटना कमजोर हो गया, चोट लग गई और घुटना कमजोर हो गया और हमने सारे एफर्ट कर लिया, 100% नहीं हो गए, हम क्या करते हैं, फिर हम अपोजिट नी को और स्ट्रांग कर देते हैं, हम उस पैर के एंकल और हिप और ओवर स्ट्रांग कर देते हैं. तो जो वीकनेस नी ज्वाइंट आई, दैट वीकनेस कैन बी कंपनसेटेड बाय स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अदर
adjacent joint. Okay, so ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर एक का टायर कमजोर है तो शॉकर अच्छा रखो, शॉकर कमजोर है टायर अच्छा रखो. Same here, one joint has become weaker because of chronic injury, and even after doing all effort we could not optimally. So the second course of action is we are trying to produce compensation by increasing the performance of our other related structure. अब मान लो हमने वो नहीं किया तो थर्ड इज प्रोवाइड सपोर्ट, डिक्रीज लोडिंग, मॉडिफाइंग और सीजिंग एक्टिविटीज ऑफ वीकर स्ट्रक्चर. हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोई चीज हो गई हम सपोर्ट लगाते हैं, ब्रेस दे दिया, सपोर्ट दे दिया, है ना, या हमने कहा कि आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी. इस मान लो हमने कहा ना डिस्क आपकी बल्ज हो गई, अब डिस्क बल्ज हो गई, हमने देखा कि आई हैव शोन डायग्राम किसी देखना कितना लोड पड़ रहा है, कितना लोड पड़ रहा, तो हमने देखा कि जो पोजीशन डिस्क डाल रही थी अब हमारी डिस्क कमजोर हो गई, तो आई विल आस्क माय पेशेंट टू अवॉइड दोस पोजीशंस व्हिच आर गोइंग टू एक्सर्ट मोर डिस्क. जो स्ट्रक्चर वीक हो गया और वीक का हम कंपनसेशन नहीं बना पाए, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की कुछ ऐसी एक्टिविटीज व्हिच आर मोर लोड ऑन दैट स्ट्रक्चर, पेशेंट टू अवॉइड द स्ट्रक्चर, और वी आर प्रोवाइडिंग देम सम सपोर्ट. ओके, सो प्रिवेंशन कैसे करते हैं, हम करते हैं प्रिवेंशन अर्गोनॉमिक है. अर्गोनॉमिक मीन सेटिंग अप योर ऑफिस, योर वर्किंग एनवायरनमेंट. हम आपकी कार में कैसे बैठना है, आपको आप कैसे बैठना है, टॉयलेट में कैसे बैठना है, जो भी काम आपकी डेली लिविंग एक्टिविटी हम उसको एनालाइज करते हैं, चाहे वो हाउस वर्क हो, होम वर्कर हो, चाहे वो ऑफिस वर्कर हो, हम उनकी पूरी दिन की एक्टिविटीज करके हम उनको एनवायरनमेंट को एडवाइस करके वी कैन एडवाइस देम so they should have a least injury during the posture. अब अभी you can see this diagram, you see how we should sit. The person is sitting, standing, कितना लोड 100%, when he is sitting with the and hip angle is 110. You can see, are you seeing the diagram? No sir, role of physiotherapy पे रुका हुआ है सर. हाँ, हेलो, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी का जो स्लाइड दिख रहा है सर. हेलो सर आपका स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी हेडिंग है वो दिख रही है. ठीक है, नहीं सर, you we are discussing here, okay, कि how should, अब देखिए जो हमारा हिप का, हमारा थाई है और बैक है, उसका एंगल इज 110, दैट इज लोडेड 105. जब हमारा एंगल 100 डिग्री हो गया, लोड और बढ़ गया, डिग्री हो गया, लोड और, आई विल सेंड यू द पीपीटी, यू कैन सी ओवर हियर कि व्हेन वी आर सिटिंग विद द एंगल ऑफ 110 डिग्री, हमारा थाई का एंगल और जो स्पाइन एंगल है 110 डिग्री है, दैट इज द बेस्ट सिटिंग एंगल. सो डिस्क इज हैविंग लीस्ट प्रेशर. लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमारे डिस्क प्रेशर बढ़ता जाएगा, एंड वी शुड ट्राई टू सिटिंग विद फॉरवर्ड फ्लेक्शन. ओके, व्हेन वी आर सिटिंग ऑन चेयर फ्लेक्शन, इट मीन my disc is having more and more pressure, so we are predisposed disc for bulge. Next I have given up position, so I have given sleeping position is distribute weight evenly on spine, put pillow on the knee and maintain natural spine curve. तो पीठ पे लेटना बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन है ऑन द बैक. डिसेंट स्लीपिंग पोजीशन इज साइड लाइन, डिसेंट है, बेस्ट नहीं है. And worst sleeping position is sleeping on stomach. Okay, I have shown you the diagram. I will send you the PPT. You can share PPT with the others. Okay, these are some sleeping position. I have shared the PPT of the what are the good posture checklist. And I am sitting on the chair and desktop. Head should be high, chin should be forward, shoulder should be back, back should be straight, chest should be out, and tummy should be in. Okay, these are the ideal chest when I am sitting on chair with using laptop. Okay, and I have shown diagram of correct and incorrect posture in the office कि कैसे हमें सामान उठाना, कैसे ड्राइव करना है, कैसे हमें जो है चलना है. Share different diagram for sitting. Next is prevention through education. You
अगर we can encounter a distance without having, and for each for the sitting job professional ki how to perform stretching of your muscles then healthy. Then we have different machines, modalities which can be used for treating different musculoskeletal condition. There are number of ultrasound, SWD, MWD, gym ball. We have a lot of modalities treating you fitter. Next is orthosis. You maybe heard about lumbar, knee support, ankle support, shoulder support. These can be used when the structure are weaker and we want to make you mobile, functional. So we will give you, we will prescribe, so your joint should have less load and this should support you. Okay. These are all about how physiotherapy is going to help you in prevention, in and in promotion of musculoskeletal. Now the take home message is musculoskeletal disorder, the top leading problem, work related injury. Okay. This is the most commonest cause of problem which is going to work. Musculoskeletal problem are responsible for more than lost work day, any other injury or illness. यानी कि मैक्सिमम जो लोग छुट्टी करते हैं उसका one of the commonest causes musculoskeletal problem. There is no medicine to cure but effectively prevent, manage this disorder. है ना? कोई दवा नहीं है इसको ठीक करने के लिए. दवा सिर्फ किसकी है? पेन के, musculoskeletal disorder को ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं. There is no medicine available in the world. Only physiotherapy will help you. Painkiller can only pain relief for some time. It is not going to treat your cause of the problem. So physiotherapy can effectively prevent and manage disorder. Sign is unnoticed and symptom appear very late. दो चीजें होती हैं. एक होती है साइन और सिम्टम. साइन क्या होता है? जो डॉक्टर पता लगाता है. सिम्टम क्या होता है? जो पेशेंट को दर्द या स्वेलिंग या पेन होता है ना? तो सिम्टम बहुत बाद में आता है. Sometimes you are having problem but your body is managing it without giving any symptom, and when the body fails to manage then it will give you pain. Okay, so it is always better for everyone who is working in sitting posture regularly visit at least 3 months a week, once in 3 months to check his musculoskeletal system. कुछ अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, कहीं बॉडी में कोई इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. So I will always advise you, everyone should go for regular physiotherapy checkup for at least 3 to 6 months. Okay. Exercise is the best medicine, but it must be prescribed or supervised. ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज करें क्योंकि एक्सरसाइज ने कहा एक्सरसाइज हार्मफुल होती है, डैमेजिंग होती है. So whenever you are planning for fitness, should always go to a physiotherapist and consult for your exercises as per your body type, as per your job requirement. Exercise must prescribe as per the requirement of body and occupation. Muscle is the core in managing musculoskeletal. यानी जो भी इलाज होता है basically regular physical activity at least 150 minutes of moderate intensity per week for adult is WHO ने रिकमेंड किया है कि हर एडल्ट को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है. फिजिकल एक्टिविटी नहीं, हम लोग क्या करते हैं, अरे मैं तो दिन भर करता रहता हूँ, मुझे क्या जरूरत एक्सरसाइज करने की. नहीं, एक्सरसाइज एक्सर्शन टू द डिफरेंट थिंग. ओके, जो हम काम करते हैं दैट इज एक्सर्शन. एक्सरसाइज के लिए क्या होता है, आपके हाथ में कलम है, दिल में चलाते रहे, दिमाग कहीं और रहे, यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ सिंगल वर्ड. जब तक ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ फुल थिंग. ओके, सेम एज व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, यू शुड एक्सरसाइज. ओके, आप जा रहे हैं, एक्सरसाइज में क्या होता है, हम अलग अलग स्ट्रक्चर को इफेक्टिवली यूज. काम में क्या होता है कि हमारा ओवर यूज हो रहा है. तो never misinterpret between the exercise and work. Okay, work is not exercise. Okay, work is different thing. जहां पे आपका गोल अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है, हाँ, और एक्सरसाइज में गोल अलग होता है. तो exercise should not be mixed with the work. Okay, regular exercise is recommended by WHO to reduce risk of heart disease, diabetes, कैंसर एंड ऑल कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी. है ना, अगर आप हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो यू विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर एंड ऑल अदर डिजीजेस इफेक्टिवली.
regular screening of musculoskeletal health is necessary with expert. As I've already told you, you must visit at least once in 6 months expert to assess your whole body musculoskeletal health. So it is always better to diagnose it as a so it could be effectively treated. अगर problem बड़ी हुई है तो उसको treat करना मुश्किल होता है. Frequently posture to ease the constant structure. Take short break from the chair. I have already told you कि आपको हर 1 घंटे हो सके 1 गिलास पानी पी लीजिए, आप ब्रीदिंग करिए, स्ट्रेच करिए, वॉक करिए 2 मिनट, फिर बैठे. 2 मिनट का ब्रेक 1 घंटे मोर देन इनफ है. लेकिन मान लगा कि शुरू में आपको मुश्किल होगा, बैठ जाएंगे आप, तो आप अलार्म लगा के बैठिए कि हर घंटे में वॉक करना है, स्ट्रेच करना है, पानी पीना, बैठ जाना है. एंड you will find marked difference in health after 1 to 2 months when you do it regularly. Okay, workstation must be ergonomically designed and promote good posture. हमेशा जो है जहां पे आप बैठते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, जहां पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, always call a physiotherapist and get a from them कि your office setting is appropriate or not, and it will help you a lot. Excessive mental work lead to deficient blood supply in other part of the body. हमने बताया आपको काम करेंगे, बॉडी के अलग हिस्सों को कम खून मिलेगा, वो कमजोर हो जाएंगे. तो बीच बीच में आप थोड़ा रेस्ट, है ना, रिलैक्सेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, जिससे क्या हो कि दिमाग से के बॉडी को खून भी जाए. बैलेंस बिटवीन बॉडी पोटेंशियल एंड वर्क रिक्वायरमेंट इज की. हमारा जो बॉडी का स्टेमिना है और वर्क शुड हैव अ बैलेंस. So what can we do? Take walking breaks, high 10,000 per day, जो WHO ने रिकमेंड किया है कि आप 10,000 स्टेप पर डे चलें, है ना. Use a stand-up computer desk. In 60 standing burn 60 calorie more per hour than sitting. ना, अगर आप बीच में खड़े होते रहते हैं तो अच्छा है. Stretch your leg or stand up. हमने कहा कि आपको स्ट्रेच करना है हर 30 से 40 मिनट. हमने 1 घंटा बोल दिया, बट रिकमेंडेशन है वो आपको हर 30 से 40 मिनट बाद खड़े बॉडी को स्टैंड अप 16 टाइम्स फॉर 2 मिनट. यानी कि आप जो है 16 बार ये रिकमेंडेशन है कि 2 मिनट के लिए खड़े हैं. ओके, थैंक यू. सो इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस थिंग, वी save our body from development of different problem. We will have more fitter heart, liver, lung, and kidney. So how can these exercises help us to be fitter, not only for the musculoskeletal health, but for the other vital organ like heart, liver, kidney, and brain? Thank you so much. If you have any question, please ask me. Hello. Urvashi, are you facing certain problem from your side, or it is for everyone? Because we are able to listen. Yes, it is a breakages, but we are listening to it. You have written that, sir, nothing is understandable. Could you please explain? Sorry, sir. What is the question? Urvashi, see the chat box, sir. There are some questions in the chat box. Chat box, okay. Chat box. It's just about the sound thing. Maybe if everybody is able to hear, then maybe it's possible. Actually, we will try to send a recording of this session. I hope that the Google Meet recording would be better than the live, sometime it may happen because the internet connectivity, the things are not coming properly, and this time also we are facing that. So hopefully in the recording session the things would be quite suitable than the live session. So For the sharing such useful information, all of us actually I am not able to understand your question because your voice is breaking like anything. I don't know about me, I'm just sharing. Urvashi, it would be better if you can write your query. I will try to resolve it definitely. Dr. Urvashi, please. So, Shivani, can you conclude the session? Dr. Shivani, if you are with us.
Yes, sir, I'm here only. Please conclude the session. Okay, And thank you. it's really difficult sometimes because of internet to get the things in place. Yeah, the voice was breaking sometimes, but yes, the overall session was very good. I thank Dr. Sohrab for his wonderful insights regarding the session, and it was a knowledgeable session for all of us. The takeaways was don't take stress, guys, and just do your research. Take proper vitamins and minerals. Stay healthy and happy. Thank you so much, sir, for us. Thanks a lot. Thank you, sir. Thanks a lot. It's nice conclusion from Dr. Shivani. We'll follow it. Thank you, sir. So we will meet at 2:30, and on 2:30 sharp we will shoot the question link, and please be ready. The questions are very easy to answer because it is related to the videos which we share or the lectures you have attended. Hopefully we all will pass. So